Hello everyone and welcome back to yet another video of the chemistry series, and in this particular video we'll be doing electrochemistry, which is the third chapter from class 12 chemistry. For the ones who are new here, we just do NCERT in every line of it, so this can serve as an audiobook as well as an NCERT highlight series, so you can watch your videos on the go in the least possible time and still cover everything. So let's begin. Electrochemistry is the study of production of electricity from energy released during spontaneous chemical reactions and the use of electrical energy to bring about non-spontaneous chemical transformations. The subject is of importance both for theoretical and practical considerations. A large number of metals, sodium hydroxide, chlorine, fluorine, and many other chemicals are produced by electrochemical methods. Batteries and fuel cells convert chemical energy into electrical energy and are used on a large scale in various instruments and devices. So basically the very introductory paragraph trying to explain the relation, the transformations from chemical energy into electrical energy, and that's what we deal in electrochemistry. So the reactions carried out electrochemically can be energy efficient and less polluting also. Therefore, study of electrochemistry is important for creating new technologies that are eco-friendly. The transmission of sensory signals through cells to brain and vice versa, and communication between the cells are known to have electrochemical origin only, because क्या है basically chemicals are being transmitted और electrical signals भी transmit होते हैं, हमारी neurology में भी हम देखते हैं. So electrochemistry is therefore a very vast and interdisciplinary subject. In this unit we'll cover only some of its important elementary aspects. All right, so let's see how do we convert chemical energy into electrical energy and electrical energy into chemical one. That's what we do. So first is electrochemical cell. Electrochemical cell में क्या होता है, chemical energy को electrical energy में convert करते हैं. All right, so this is basically only possible when there's a spontaneous reaction taking place और उसकी chemical energy बाद में electrical energy में convert होता है. That's what it's saying. अभी यहाँ पे डेनियल सेल इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल गिवन, जो आपको याद रखना है. इसमें एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड जिंक और कॉपर का ही लिया जाता है और एक सॉल्ट ब्रिज लिया जाता है. फाइन, इवन द इक्वेशन इज गिवन ओवर हियर. This cell converts the chemical energy liberated during the redox to electrical energy and has an electrical potential to 1.1 volt when concentration of Zn and copper ions is unity. So इसका एक potential difference भी create होता है because current flow करेगा, that means there's a potential difference. Such device is called a galvanic cell and a voltaic cell. Even external potential is applied in the galvanic cell. But अब ये क्या कर रहे हैं, ये opposite direction में external potential apply कर रहे हैं. इस पूरे paragraph का यही मतलब है. जब हमने वो external potential apply किया until it reached 1.1 volt, वो क्या करता गया, current फिर भी flow करता गया. Eventually जब 1.1 volt तक बना हमारा opposite direction वाला potential, then no current would flow. And then when at the end हमने और potential add किया again in the opposite direction, then current started to flow in the reverse direction. वो ये कह रहा है यहाँ पे. We find that reaction continues to take place till the opposing voltage reaches the value of 1.1 volt. When the reaction stops altogether and no current flows through the cell, any further increase in the external potential again starts the reaction but in the opposite direction. It now functions as an electrolytic cell. यानी अब हम external source यानी external battery के through electrical energy supply कर रहे हैं और उसकी वजह से हम non-spontaneous chemical reactions को करा रहे हैं. A device for using electrical energy to carry non-spontaneous chemical reactions. Both types of cells are quite important and we shall study them. all right, तो इन्हें एक ही पैराग्राफ में दोनों को कवर किया. इलेक्ट्रोकेमिकल थी पहले, जब तक हमने एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 से कम लगाया, फिर 1.1 के बराबर लगाया तो करंट 0 हो गया, फिर 1.1 से ज्यादा लगाया और करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो हुआ, एंड दैट वाज इलेक्ट्रोलिटिक सेल. आते हैं अब galvanic cell. As mentioned earlier, a galvanic cell is an electrochemical cell that converts the chemical energy of a spontaneous redox into electrical energy. In this device, the Gibbs energy of the spontaneous redox reaction is converted into electrical work, which may be used for running a motor or the electrical gadgets. So gadgets तो फिर कुछ भी हो सकते हैं, but basically the idea that जो भी गिब्स फ्री एनर्जी स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन में है उसको हम इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं. डेनियल सेल का यहाँ पे रिएक्शन दिया है. This cell, अब अच्छा, this every time a single cell reaction whenever it's written is basically a part of two. alright, दो parts को जब हम join करते हैं, हमारा reduction half होता है, दूसरा oxidation half होता है. हम सब ने सुना है reduction at the cathode, oxidation at the anode. So reduction में gain of electrons will take place, तो वो copper ions का हो रहा है. zinc में loss of electrons हो रहा है, so oxidation half of the cell. These reactions occur in two different portions of the Daniell cell. जो मैं कह रही थी, the reduction half reaction occurs on the copper electrode while the oxidation half occurs on the zinc electrode. Usually हम left में anode, फिर हमारा salt bridge और cathode ऐसे usually denote करते हैं. These two portions of the cells are also called half cells or redox couples. The copper electrode may be called the reduction half cell and the zinc electrode the oxidation half cell.
we can construct innumerable number of galvanic cells on the pattern of Daniell cell by taking combinations of different half cells. तो जरूरी नहीं है कॉपर और जिंक ही ले सकते हैं. We can take innumerable types of electrodes, different electrolytes. The two half cells are connected by a metallic wire through a voltmeter and a switch externally. यानी बैटरी सोर्स नहीं है, हम वोल्टमीटर और स्विच तो कनेक्ट कर रहे हैं बट हम कोई एक्सटर्नल पावर, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं दे रहे, बिकॉज हम ऑलरेडी केमिकल एनर्जी से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल और गैल्वानिक और वोल्टिक सेल्स. द इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द टू हाफ सेल्स आर कनेक्टेड इंटरनली. अब इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे कनेक्टेड है? सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड है. इट हैज अ ह्यूज सिग्निफिकेंस. समटाइम्स बोथ द इलेक्ट्रोड्स dip in the same electrolyte, and in such cases we do not require a salt bridge. At each electrode electrolyte interface, there's a tendency of metal ions from the solution to deposit on the metal electrode, trying to make it positively charged. अब ये पैराग्राफ क्या कह रहा है? बेसिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में कह रहा है. व्हाट इज बेसिकली एन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? व्हाट हैपेंस इज, हर एक इलेक्ट्रोड में जो भी हमारा मेटल इलेक्ट्रोड होता है, इट हैज अ टेंडेंसी टू रिलीज इट्स मेटल आयंस इनटू द सोल्यूशन, ताकि वो खुद इलेक्ट्रॉन रिच बन जाए. और जो सोल्यूशन में मेटल आयंस होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है टू गो एंड डिपॉजिट ऑन द इलेक्ट्रोड. तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है ऑन एट इक्विलिब्रियम स्टेज, जहाँ पे there's a separation of charges, ठीक है, डिपेंड्स कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग है, किसकी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है, तो हमारे पास एक पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है. तो लेट्स सी व्हाट द पैराग्राफ हैज टू से अबाउट दिस. Alright. At the same time, metal atoms of the electrode have a tendency to go into the solution as ions and leave behind the electrons at the electrode, trying to make it negatively charged. At equilibrium, there is a separation of charges, and depending on the tendencies of the two opposing reactions, the electrode may be positively or negatively charged with respect to what? The solution, the electrolyte. A potential difference develops between the electrode and the electrolyte, which is called electrode potential. When the concentrations of all the species involved in the half cell is unity, तब हम इसी electrode potential को standard electrode potential कहते हैं. So यानी जब भी हम स्टैंडर्ड कंडीशंस लेंगे तो यही हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड के बीच में, इसी को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताएंगे, जो हम ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. अकॉर्डिंग टू IUPAC, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स आर नाउ कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स. तो रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक ही चीज है. Galvanic cell, the half cell in which oxidation takes place, is called the anode, and इसका negative potential होगा. Anode जिस पे oxidation होगी उस पे reduction potential कम होगा. जिसका reduction potential positive होगा या ज़्यादा होगा उस पे reduction होगी, वो cathode होगा. Simple. Thus there exists a potential difference between the two electrodes, and as soon as the switch is in the on position, the electrons flow from negative electrode to the positive electrode. So current will flow in the opposite direction to that of the electrons. We know it. Then we have, all right, the potential difference between the two electrodes of a galvanic cell is called the cell potential. अब दो electrodes के बीच में जो potential है उसको cell potential कहते हैं. Cell potential is the difference between the electrode potentials, reduction potential of the cathode and the anode. तो यहाँ पे भी इन्हें reaction दिया है, E right minus E left. Right में cathode होता है, reduction potential of cathode minus reduction potential of anode. It is called the cell electromotive force, EMF, of the cell when no current is drawn through the cell. It is now an accepted convention that we keep the anode on the left and the cathode on the right while representing the galvanic cell. तो यहाँ पे इन्हें बोला galvanic cell is generally represented. How do you represent a galvanic cell? हम लेते हैं putting a vertical line between the metal and the electrolytic solution जिसमें हमने उस electrode को डुबाया है. बीच में there'll be a double vertical line, alright, between the two electrolytes connected by a salt bridge. और इस convention में the EMF of the cell is positive and is given by the potential of the half cell on the right side minus the potential of the half cell on the left hand side. Easy. So this is the cell reaction, combined cell reaction. यहाँ पे दो half cell reactions दिए at the cathode and at the anode. Fine. Cathode production हो रहा है, there's a gain of electrons, and anode पे oxidation, loss of electrons. It can be seen that the sum will lead to an overall reaction जो ऊपर लिखा हुआ है, and this is the representation. Very important. पहले copper solid था, फिर vertical line से represent किया. Electrolytic solution में copper के ions होंगे, it will be aqueous. Then double line, double vertical line, this will be the salt bridge. Alright, और यहाँ पे E cell will be reduction potential of cathode minus reduction potential of anode. वो इसका मतलब है E right minus E left. Now measurement of electrode potential. As such हम electrode potential तो measure नहीं कर सकते, but we have a way out. What we do is basically हम एक रेफरेंस को फिक्स कर लेते हैं, उसके रिस्पेक्ट में relative to that reference, which is our basically standard hydrogen electrode, relative to that we'll find out the electrode potentials. Fine, that's what it'll be trying to say. Only measure the difference between the two half cell potentials that give the EMF of the cell. Arbitrarily choose the potential of one electrode, then that of the other can be determined with respect to this. ठीक है, एक रेफरेंस मानेंगे उसको हमने स्टैंडर्ड, और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं.
platinum, hydrogen gas बीच में और फिर hydrogen aqueous is assigned zero potential at all temperatures corresponding to the reaction this. तो ये हम मानते हैं भाई इसका potential जो है वो zero लेते हैं और जो हमारी reference है. The standard hydrogen electrode consists of a platinum electrode coated with platinum black. The electrode is dipped in an acidic solution and pure hydrogen gas is bubbled through it. The concentrations of both the reduced and oxidized form of hydrogen is maintained at unity. तो दोनों concentrations को unity पे रखेंगे. Platinum electrode लेंगे coated with platinum black and you will dip it in acidic solution. और जो pure hydrogen gas है acidic solution में H positive होगा और जो pure hydrogen gas है उसको अंदर डालेंगे. This implies that the pressure of hydrogen gas is 1 bar, concentration of hydrogen is 1 molar. यानी आपने standard conditions ले लिए तभी आपको standard electrode potential मिलेगा. At 298 Kelvin, the EMF of the cell standard hydrogen electrode double line second half cell constructed by taking standard hydrogen electrode as anode, which is the reference half cell, and the other half cell as cathode gives the reduction potential of the other half cell. अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमने ले लिया रूम टेम्परेचर, हमने स्टैंडर्ड कंडीशंस ले लिए. व्हाट वी डू इज विल टेक अ सेकंड हाफ सेल, एक हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेंगे और हमारा दूसरा हाफ सेल लेंगे विच विल बी द कैथोड, जिसका हमें बाद में रिडक्शन पोटेंशियल पता चलेगा विद रिस्पेक्ट टू द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ओनली. इफ द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द ऑक्सीडाइज्ड एंड द रिड्यूस्ड फॉर्म्स ऑफ द स्पीशीज इन द राइट हैंड हाफ सेल आर यूनिटी, देन द सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो यहाँ पे अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता रहे हैं. जब भी आप स्टैंडर्ड कंडीशंस लेंगे तो ये स्टैंडर्ड बन जाएगा. ये नॉट ऊपर वही लगाया हुआ है. ऑलराइट, सो ओवर हियर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड. एनोड हमारा हाइड्रोजन है, उसको जीरो माना है तो कैथोड का इजीली मिल जाएगा. फाइन, दिस इज द मेजर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल. यहाँ पे दिस समथिंग एल्स गिवन ओवर हियर. ये आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है एनोड साइड पे और कैथोड पे आपने कॉपर ले लिया है. फाइन, तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल हम अगर इसका ईएमएफ मेजर्ड ईएमएफ 0.34 आया, ऑलराइट, व्हाट विल बी डू इज 0.34 विल बी द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर दिस. ठीक, फिर एक और यहाँ पे जिंक भी लिया गया है. दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स, यू कैन गो थ्रू देम. द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द फर्स्ट केस. इन द फर्स्ट केस इंडिकेट्स दैट कॉपर आयंस गेट रिड्यूस्ड मोर इजीली देन हाइड्रोजन आयंस. अगर पॉजिटिव साइन है इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल जीरो से ज्यादा है, हाइड्रोजन से ज्यादा इजीली कॉपर आयंस विल गेट रिड्यूस्ड. द रिवर्स प्रोसेस कैन नॉट ऑकर, दैट इज हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट ऑक्सीडाइज कॉपर, और अल्टरनेटिवली वी कैन से दैट हाइड्रोजन गैस कैन रिड्यूस कॉपर आयन under the standard conditions described above. Thus copper does not dissolve in HCl. अब यहाँ पे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का आ रहा है कि जो जितना नीचे आएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उसका रिडक्शन पोटेंशियल उतना पॉजिटिव होगा, ठीक है, और वो ही उतना जल्दी रिड्यूस होगा. इन नाइट्रिक एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड बाय नाइट्रेट आयन एंड नॉट बाय हाइड्रोजन आयन. सो हम हाइड्रोजन से कॉपर को क्या रिड्यूस नहीं करा सकते. द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन द सेकंड केस इंडिकेट्स दैट हाइड्रोजन आयंस कैन ऑक्सीडाइज जिंक. अब जिंक का अगर नेगेटिव पोटेंशियल आ रहा है यानी वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आएगा. ऊपर वाले सारे नेगेटिव है यानी उनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, दैट इज कम है. तो हाइड्रोजन से जब कम है सो हाइड्रोजन कैन ऑक्सीडाइज जिंक. फाइन, इन व्यू ऑफ दिस the half reaction for the Daniell cell can be written like this. तो यहाँ पे left electrode लिया है, the anode, and then you have the cathode also over here. The overall reaction of the cell is the sum of the above two reactions. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को आप कैंसिल आउट करेंगे और हमें एक combined cell reaction मिलेगा जिसका EMF आप ऐसे भी निकाल सकते हैं. अब हमने दोनों निकाले, जिंक का भी निकाला, कॉपर का भी निकाला, and that's how we got 1.1 volts. Sometimes metals like platinum or gold are used as inert electrodes. They do not participate in the reaction but provide their surface for oxidation or reduction reactions and for the conduction of electrons. For example, platinum is used in the following half cell. अच्छा, यहाँ पे again platinum आपने देखा it's inert, it won't be taking part in any of the reactions. Yet it is there, it will provide a surface for reaction. ठीक है, तो with half cell reaction ऐसे bromine electrode again. ऑलराइट, जिसका हाफ सेल रिएक्शन ये है. इसमें आपने कहीं पे प्लैटिनम नहीं देखा. व्हाई? बिकॉज इट वाज जस्ट देयर टू प्रोवाइड अ सरफेस फॉर द रिएक्शन एंड इट डिडंट पार्टिसिपेट इटसेल्फ बिकॉज इट्स एन इनर्ट इलेक्ट्रोड. The standard electron potentials are very important and we can extract a lot of useful information from them. The values of standard electrode potentials for some selected half cell reduction reactions are given. If the standard potential of an electrode is greater than 0, then its reduced form is more stable compared to hydrogen gas. अगर positive है, 0 से ज़्यादा है तो वो reduction की tendency दिखाएगा. Similarly, if the standard electrode potential is negative, hydrogen gas is more stable than the reduced form of the species. ये इसका technical meaning है. It can be seen that the standard
standard electrode potential for fluorine is the highest. All right, तो सबसे ज़्यादा electrode potential इन्हें fluorine का दिया है. All right, has the maximum tendency to get reduced to fluoride ions, and therefore fluorine gas is the strongest oxidizing agent and fluoride ion is the weakest reducing agent. That's what it's trying to say. जो हमारे fluorine gas है, why is it a strong oxidizing agent? Because it has a high tendency to undergo reduction itself. जो खुद reduce होते हैं वो दूसरों को oxidize कराते हैं. Lithium on the other hand is the lowest electrode potential, indicating that lithium ion is the weakest oxidizing agent. अगर इसका खुद electrode potential कम है तो lithium metal, it's the most powerful reducing agent but a weak oxidizing agent. It may be seen that as we go from top to bottom, यहाँ पे वो table दिया हुआ है, standard electrode potential decreases, and with this decreasing the oxidizing power of the species on the left and increases the reducing power of the species on the right. Electrochemical cells are extensively used for determining the pH of solution, solubility product, equilibrium constant and other thermodynamic properties. So where's the table? Here we go. This is the table. तो आपने यहाँ पे you have seen for fluorine again reduced form बहुत ही ज़्यादा stable होगा because this has a high reduction potential value. और सबसे कम जो यहाँ पे दिया हुआ है that is lithium. Lithium का negative 3.05. So it's a strong reducing agent because it'll undergo oxidation itself. Alright, so इस पे depend करता है. Now the next is Nernst equation. We have assumed in the previous section that the concentration of all the species involved in the electrode is unity. ठीक है, तभी हमें standard results मिलते हैं. This need not always be true. अब हमेशा क्या है कि आप हमेशा भी concentration जो है उसको एक unity हमेशा नहीं मान सकते हैं. It's not possible in every case. So what do we do over here? ऐसे situation में you have the Nernst equation short for the electrode reaction. इसके जितने भी पॉजिटिव चार्जेस है उतने इलेक्ट्रॉन्स ये लेगा एंड ये फाइनली न्यूट्रल बनेगा. द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कॉन्सेंट्रेशन मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज. अब कोई भी कॉन्सेंट्रेशन ले लें हम, इट्स नॉट नेसेसरी स्टैंडर्ड कंडीशंस पे तो हम इनका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो निकाल सकते हैं. सो इट्स बेसिकली जो भी हमारा ई सेल होगा दैट विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल, जो उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, जो दिया होगा यूजुअली क्वेश्चन में. नहीं भी दिया होगा वी नो इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कैथोड माइनस एनोड. फाइन, माइनस आर टी बाय एन एफ. If you take RT is any temperature over here, ln of m by mn plus, यानी जो आपका QC होता है ना, product concentration by reactant concentration, वो ये हमारा Nernst equation है. अब इसके बहुत सारे forms है. अब यहाँ पे अगर आपने where this is 96500, हम F को मानते हैं is the Faraday's constant, n is the number of electrons जिनका sharing हो रहा है. Alright, let me show you here. अच्छा, यहाँ पे there's something else given. A negative E naught means that the redox couple is a stronger reducing agent than H positive or H2 couple. ये हमारे जो redox couples होते हैं ये इनसे अगर negative electrode potential है यानी then it is a stronger reducing agent. Alright, because it has a tendency to undergo oxidation itself because its reduction potential is negative, it's less. तो उसी तरह positive electrode potential means the redox couple is a weaker reducing agent. Why? Because it will not have a strong tendency to undergo oxidation itself. Next up we have, and it's all with respect to hydrogen only, Daniell cell electrode potential for any given concentration of copper and zinc ions we write. अब हमें Daniell cell जो है हम cathode का reaction अलग लिखेंगे हमेशा for questions, and anode का reaction अलग लिखेंगे. Then you'll find out the cell potential. ठीक, उसके बाद we'll have alright, here we go. This is the Nernst equation being applied और ये final equation है हमारा. E cell is E naught cell minus RT by 2F. Why? Because electrons का जो transfer है N is 2 और यहाँ पे log of Zn plus 2 by Cu plus 2. आप जब total cell का reaction लिखते हैं आपको पता चलता है reactant में कौन है और product में कौन है. It can be seen that E cell depends on the concentration of both copper and zinc ions. It increases with increase in the concentration of copper ions and decrease in the concentration of zinc ions. By converting the natural logarithm, तो वो हम कैसे करते हैं 2.303 है ना, that's what we multiply and we get ln का log बना देते हैं. So अब standard conditions में this is what usually comes and this is also what you have to remember. So हम क्या लेते हैं 0.06, इसको हम बाद में round off करके ले लेते हैं हमारा ये जो है जो भी हमारा RT 2.303 Faraday's constant सारे को मिला के this is the final equation we get. To save calculation time, we should use the same number of electrons and for both the electrodes and thus for the following cell. तो यहाँ पे the cell reaction Nernst equation can be written as this. तो फिर आप इसके standard conditions में भी कर सकते हैं. For a general reaction also they've given. ठीक है, यहाँ पे भी यही दिया है कि QC हम कैसे निकालते हैं. I think you've done this already in equilibrium I believe.
सो जहाँ पे आप प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हैं, दैट इज व्हाट QC इज. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्नेस्ट इक्वेशन. अब यहाँ से हम K इक्विलिब्रियम भी निकाल सकते हैं. If the circuit in Daniell cell is closed, then we know that the reaction this takes place as time passes. The concentration of zinc ions keeps on increasing while the concentration of copper keeps on decreasing. At the same time, voltage of the cell is read on the voltmeter keeps on decreasing. After some time, we shall know that there is no change in the concentration of copper and zinc ions, and at the same time, voltmeter gives 0 reading. This indicates that equilibrium has been attained. In this situation, the Nernst equation may be written as. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब equilibrium attain हो जाएगा, basically जो कॉन्सेंट्रेशन है वो स्टेबलाइज हो जाएगा, यानी कोई कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा कॉपर या जिंक में. ऑलराइट, और तब हम कहते हैं जो E0 सेल होता है एट इक्विलिब्रियम इट इज टेकन टू बी 0. The E cell, the whatever electrode potential of the entire cell you have, you will take it to be 0. क्यों? क्योंकि आप कोई फ्लो नहीं हो रहा, कोई concentration change नहीं हो रहा, and the voltmeter will give now 0 reading. There will be no potential difference. जब वो 0 होता है तो तब हम E0 cell निकाल सकते हैं. Alright, because this is E0 cell, ये माइनस वाली टर्म सारी यहाँ प्लस में चली जाएगी. And also at equilibrium this QC becomes KC, and that is how you find out equilibrium constant. Very easy. Alright, तो KC यहाँ पे आप निकाल सकते हैं क्योंकि आप बस QC को रिप्लेस करेंगे KC से एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम. सो गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड स्टैंडर्ड पोटेंशियल. स्टैंडर्ड पोटेंशियल लेते हैं बिकॉज E तो 0 है, E0 निकालते हैं यहाँ से. दस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन डिफिकल्ट टू मेजर अदरवाइज कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द corresponding E0 value of the cell. That's what we do. Next up we have electrochemical cell and Gibbs energy of the reaction. Electrical work done in 1 second is equal to electrical potential multiplied by total charge passed. If we want to obtain maximum work from a galvanic cell, then charge has to be passed reversibly. The reversible work done by a galvanic cell is equal to decrease in its Gibbs energy, and therefore if the EMF of the cell is E and NF is the amount of charge and delta G is the Gibbs energy, then this is the equation. Very important. अब Gibbs free energy और जो हमारा जो कुछ भी electrical potential है सेल का, उसमें क्या relation है वो ये है. तो यहाँ पे व्हाट इज एक्चुअली द पैराग्राफ, जब हम रिवर्सिबली एडिशनल वर्क करेंगे, एडिशनल चार्ज पास कराएंगे तो मैक्सिमम वर्क विल बी ऑब्टेन. सो हमने ले लिया माइनस टाइम्स NFE. E इज वट एवर वोल्टेज यू हैव एंड N टाइम्स F इज द चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज बिन पास्ड. ठीक, E cell is an intensive parameter, delta G is an extensive parameter. यानी इसका यही मतलब है कि delta G जो है it's additive but E is not additive directly. All right. So if we write the direct reaction like this, इसका delta G ये है. When we write the reaction this, इसका delta G ये है. If the concentration of all the reacting species is unity, then E cell is equal to E0 cell. And what do we have over here? ये delta G0 निकलेगा वहाँ से standard conditions में. Alright. From the measurement of E0 cell, we can obtain an important thermodynamic quantity delta G0. That's the standard Gibbs energy of the reaction. From the latter, we can calculate equilibrium constant by the equation this. तो ये एक और equation दिया minus RT ln K. सो यहाँ से गिब्स फ्री एनर्जी पता चल गया, RT आपको पता है, तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं एट इक्विलिब्रियम इन स्टैंडर्ड कंडीशंस ओनली. फाइन. मूविंग ऑन वी हैव conductance of electrolytic solutions. अभी तक मुझे लगता है जो भी था was a little dry of theory, but now it's really easy and it's more or less theoretical. So we have conductance of electrolytic solutions. It is necessary to define a few terms before we consider the subject of conductance of electricity through electrolytic solutions. अब conductance जो है उसके बहुत सारे terms है, बहुत easy है. The electrical resistance is represented by the symbol R. It's measured in ohm. We have done this in physics also ever since, so there's nothing rocket sciencey, which in terms of SI base units is equal to this. It can be measured with the help of a Wheatstone bridge, with which you're only familiar in physics. The electrical resistance of any object is directly proportional to its length, inversely proportional to area. ये भी हम बहुत बचपन से पढ़, R is equal to rho L by A. Rho क्या है? Constant of proportionality. It's called the resistivity or specific resistance. यानी एक यूनिट में हम देखते हैं कि कितना रेजिस्टेंस आता है. Its SI units are ohm meter. And quite often it's sub-multiple ohm centimeters also used. IUPAC recommends the use of term resistivity over specific resistance. Hence, in the rest of the book, we shall use resistivity. Physically, resistivity for a substance is resistance when it is 1 meter long and its area of cross section is 1 meter square. So, for a unit substance, we find out the resistance, उसको resistivity बोलते हैं. अब हम यहाँ पे देख रहे हैं inverse of resistance, which is conductance G, और वहाँ पे भी relation कुछ ऐसा ही 1 by R. तो 1 R was rho L by A, उसको टेढ़ा करके हमें कुछ ऐसा मिलेगा. 1 by rho जो यहाँ पे, just like 1 by R is G, which is resistance, similarly 1 by resistivity is conductivity, that is specific conductance.
The SI unit of conductance is Siemens, all right, and the inverse of resistivity called conductivity is represented by K, which is kappa. IUPAC is recommended the use of conductivity. Fine, the SI unit of conductivity is Siemens per meter, but quite often Siemens per centimeter will do. Conductivity of a material is its conductance when it is 1 meter long and its area is 1 meter square cross section. तो again standard conditions में जो conductance होगी उसी को हम conductivity बोलते हैं. It can be seen that the magnitude of conductivity varies a great deal and depends on the nature of material. It also depends on the temperature and pressure at which the measurements are made. Materials are classified into conductors, insulators and semiconductors. ये आपने इससे पहले भी बहुत lessons में देखा होगा. Depending on the magnitude of their conductivity, कितना वो conduct कर सकते हैं या कितना resistive forces है, accordingly हम बोलते हैं कि उसका is it a conductor, is it an insulator or whatever. Fine. Metals and their alloys have very large conductivity and are known as conductors. Certain non-metals like carbon black, graphite and some organic polymers are also electronically conducting. Electronically conducting means what will be the conducting agent? It will be electron only substances like glass, ceramics have very low conductivity and are known as insulators. Substances, dielectrics भी insulators भी बोलते हैं. Substances like silicon, doped silicon, gallium arsenide having conductivity between conductors and insulators, उनको semiconductors बोलते हैं. I think you have done a great deal about the semiconductor lesson in physics only in class 12. सो यहाँ पे तो बस सरफेस लेवल पे दिया होगा कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के दरमियान में बीच में जो कंडक्टिविटी वाले सब्सटेंस आते हैं उनको सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं. सर्टेन मटेरियल्स कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स बाय डेफिनेशन हैव जीरो रेजिस्टिविटी और इन्फिनिट कंडक्टिविटी, जो बहुत आइडियल है बट इट्स पॉसिबल. अर्लियर ओनली मेटल्स एंड देयर अलॉयज एट वेरी लो टेम्परेचर्स वर नोन टू बिहेव एज सुपर कंडक्टर्स, but nowadays a number of ceramic materials and mixed oxides are also known to show superconductivity at temperatures as high as 150 Kelvin. Electrical conductance through metals is called metallic or electronic conductance and it is due to the movement of electrons. तो हमारे पास electrolytic conductance होती है और हमारे पास metallic या electronic conductance होती है, जो कि basically metals में जो free electrons है उनकी movement से जो conductance होती है उसी को हम metallic conductance बोलते हैं. The electronic conductance depends on nature and structure of metal, number of valence electrons and temperature. So there's an inverse relation. जितना ज़्यादा temperature होगा conductance उतना कम होगा because there'll be more random motion and resistance बढ़ जाता है. As the electrons enter at one end and go out through the other, the composition of the metallic conductor remains unchanged. So there's technically no chemical reaction going on because composition will remain same. Through semiconductors is more complex. You know, there's that valence band, conduction band and all of the various theories. We already know that even very pure water has small amounts of hydrogen and hydroxyl ions which lend it very low conductivity. When electrolytes are dissolved in water, they furnish their own ions. जो मैं आपको बोल रही थी, ionic conductance or electrolytic conductance, the second type, जहाँ पे electrons will not be the charge carriers, but here what is it? It is the ions which are going to conduct the electricity. The conductivity of electrolytic or ionic solutions depends again on the nature of electrolyte, size of the ions, nature of the solvent and viscosity, concentration of the electrolyte, जितना ज़्यादा ions होंगे उतना ज़्यादा conductivity and temperature. और यहाँ पे direct relation है, very important. जो हमारा electronic conductance था that was inversely proportional to temperature, but here what happens is जो ions है they'll start to conduct in a better way when the temperature is high. So there's a direct relationship. Passage of current through ionic solution over a prolonged period can lead to change in its composition due to electrochemical reactions. So there's reactions going on in case of electrolytic conductance. So composition can also change. Now what is the measurement of conductivity of ionic solutions? We know that the accurate measurement of an unknown resistance can be performed on a Wheatstone bridge. हमने किया है. However, for measuring the resistance of an ionic solution, we face two problems. Firstly, passing direct current DC changes the composition of the solution. Secondly, a solution cannot be connected to the bridge like a metallic wire or other solid conductor. The first difficulty is resolved by using an AC or an alternating current source. ठीक है. Second problem जो है specially designed vessel called conductivity cell हम use करते हैं और इसके बहुत सारे designs वगैरह एक आपको यहाँ पे दिया हुआ है. That's what it's trying to say. So we have an alternating current supply. ठीक है, अब हमें क्या करना है? We have to measure the conductivity of ionic solutions. ठीक है, metals का तो conductivity एक चीज़ है. अगर हमारे पास solution है उसमें हम कैसे electrodes connect करेंगे, हम information collect करेंगे कितना conductivity है. So for that we have conductivity cells. Moving on, we have
Basically, it consists of two platinum electrodes coated with platinum black. These have area of cross section equal to A and are separated by distance L. Solution confined between these two electrodes is a column of length L, area of cross section A. Very easy. Resistance हमें पता है rho L by A है और उसी को हम 1 by K A भी लिख सकते हैं, L by K A. The quantity L by A, अभी हर जगह आप देखेंगे, so it's the cell constant is denoted by the symbol G star. It depends on the distance between the electrodes and the area of cross section and has the dimensions of length, all right, and can be calculated if we know L and A. So cell constant एक ऐसा है जो L by A आपको value बताएगा. Measurement of L and A is not only inconvenient but also unreliable. The cell constants usually determined by measuring the resistance of the cell containing a solution whose conductivity is already known. For this purpose we generally use potassium chloride solutions जिनका conductivity known होता है accurately at various concentrations. तो तब जाके हम ये L by A भी निकाल सकते हैं. So it's not again easy. Resistance into kappa के बराबर होता है. Alright, once the cell constant is determined, we can use it for measuring the resistance or conductivity of the any solution. The setup for the measurement of the resistance is known, shown alright. You have a conductivity cell, then you have a detector over here, कुछ दिया हुआ ऐसा, Wheatstone bridge जैसा है. It consists of two resistances, R3 and R4, a variable resistance R1, इसको आप चेंज वगैरह करा रहे, रियोस्टैट लगा लिया होगा, एंड द कंडक्टिविटी सेल हैविंग द अननोन रेजिस्टेंस R2. ये हमारा कंडक्टिविटी सेल है, इसी का रेजिस्टेंस हमें निकालना है. द व्हीटस्टोन ब्रिज इज फेड बाय एन ऑसिलेटर O, जो विच इज अ सोर्स ऑफ AC पावर, ऑल्टरनेटिंग करंट दे दिया. एंड अब AC सोर्स है, फ्रीक्वेंसी इज 550 to 5000 cycles per second. Piezo is a suitable detector, a headphone or an electronic device, and the bridge is balanced when no current passes through the detector under these conditions. अच्छा, अब ये Wheatstone bridge का experimental setup बनाया हुआ इन्होंने. तो इनने कुछ 4 resistances लिए, उसमें से एक को variable रखा, 2 को known रखा, एक हमारा unknown है जो हमारा conductivity cell है. बीच में एक detector है, current pass हुई तो it's an unbalanced Wheatstone bridge. अगर current pass नहीं हुई, it's a balanced Wheatstone bridge. अननोन रेजिस्टेंस R2 हमें निकालनी आएगी फ्रॉम द व्हीटस्टोन ब्रिज इक्वेशन, बिकॉज इनका रेशियो जो होता है वो सेम होता है ऐसे ऑपोजिट सेल्स का whenever it's a balanced Wheatstone bridge. These days, inexpensive conductivity meters are available which can directly read the conductance or resistance of the solution in the conductivity cell. Once the cell constant and the resistance of the solution in the cell is determined, the conductivity of the solution is given by the equation this. K is cell constant by R. The conductivity of solutions of different electrolytes in the same solvent and at a given temperature differs due to charge and size of the ions in which they dissociate, the concentration of ions or ease with which the ions move under a potential gradient. It therefore becomes necessary to define a physically more meaningful quantity called molar conductivity, denoted by the symbol lambda m. अब मोलर कंडक्टिविटी है हमारे पास, एक ज़्यादा मीनिंगफुल क्वांटिटी, क्योंकि हम एक मोल की बेसिकली कंडक्टिविटी देख रहे हैं, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस. फाइन, एंड दिस इज द रिलेशन. मोलर कंडक्टिविटी इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय मोलैरिटी और कॉन्सेंट्रेशन. फाइन, तो अब हम यहाँ पे क्या करें, बेसिकली ये जो कंडक्टिविटी है किस किस पे डिपेंड करती है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी कम कंडक्टिविटी होगी, ऑल राइट, जिन आयंस में वो डिसोशिएट होगा, ऑल राइट, एंड देन द ईज विद विच दीज आयंस कैन फ्लो, ऑल राइट, एंड ऑल्सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ions, the charge basically. In the above equation, if K is expressed as Simon per meter and the concentration C in mole per meter cube, जो हमारा molarity होता है, number of moles per liter of solution, then the units of lambda m are Simon meter square per mole. Mole, all right. It may be noted that 1 mole is this, सारे conversions दिए हुए हैं mathematical, ठीक है. तो 1 mole per meter cube, you know, it's 1000 times liter per meter cube into molarity, and hence हम इसको यहाँ पे 1000 से multiply करेंगे. If we use this, these are all the units. It can be calculated by using the equation this. तो यहाँ पे हमारा मोलर कंडक्टिविटी का साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है, और यहाँ पे साइमन पर सेंटीमीटर, यहाँ पे 1000 टाइम्स सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर, और मोलैरिटी मोल्स पर लीटर में होगा. तो इट्स जस्ट, यू नो, यू कैन जस्ट टेक अ पेन एंड पेपर इन योर हैंड एंड यू कैन डू कन्वर्जन्स यूनिट्स वाले. बोथ टाइप्स ऑफ यूनिट्स आर यूज्ड इन लिटरेचर एंड आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय दीज इक्वेशंस. ऑल राइट.
वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन. अब क्या रिलेशन है हमारी जो भी मोलर कंडक्टिविटी है वो कैसे चेंज होता है कॉन्सेंट्रेशन से. बोथ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी चेंज विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन बोथ फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है, जब कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है तो कंडक्टिविटी इवेंचुअली कम हो जाता है. दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय द फैक्ट दैट द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी द करंट इन अ सॉल्यूशन डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन. क्योंकि कंडक्टिविटी हम पर यूनिट वॉल्यूम देखते हैं और अगर पर यूनिट वॉल्यूम ही आयंस कम हो जाते हैं तो विच मीन्स कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया. एज अ रिजल्ट जो कंडक्टिविटी है वो कम हो जाता है. ऑलराइट, देन वी हैव इट हियर. दिस इज क्लियर फ्रॉम द इक्वेशन. कंडक्टेंस इज दिस kappa A by L, which is equal to K. Both A and L are unity in their appropriate units. ठीक है, molar conductivity of a solution at a given concentration is the conductance of the volume V of solution containing 1 mole of electrolyte kept between two electrodes with area of cross section A and distance of unit length. Therefore this. अगेन वेरी इजी, जस्ट बेसिक्स न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि हम इसकी कैसे इक्वेशन बनाएंगे. जो भी हमारी मोलर कंडक्टिविटी होगी वो हम स्टैंडर्ड कंडीशंस को फिक्स करेंगे एक सर्टन कॉन्सेंट्रेशन पे, वी वॉल्यूम पे, एरिया ए लेंगे, लेंथ एल लेंगे और जब हम उसको यूनिटी मानेंगे एल इज 1, एरिया जो है विच इज इक्वल टू अगेन वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, देन वी कैन राइट इट एज K times V. Molar conductivity increases with decrease in concentration. So there's an inverse relationship. This is because the total volume V of solution containing 1 mole of electrolyte also increases. It has been found that decrease in kappa is conductivity on dilution of a solution is more than compensated by increase in its volume. Physically, it means that at a given concentration, molar conductivity can be defined as the conductance of the electrolytic solution kept between the electrodes of a conductivity cell at unit distance, but having area of cross section large enough to accommodate sufficient volume of solution that contains 1 mole of the electrolyte. तो हम काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम जो है उसको इंक्रीज करा रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज जितना जितना हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा क्रॉस सेक्शन, तो क्रॉस सेक्शन इनफ, लेंथ भी है वो हमने यूनिटी ले लिया, द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, जो अभी हम एक सर्टन इलेक्ट्रोलाइट का जो है कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन देखना है. व्हेन कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेज जीरो द मोलर कंडक्टिविटी इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल लैम्डा एम नॉट. अब क्या है, जब कॉन्सेंट्रेशन ही हमने जीरो कर दी ऑलमोस्ट, जितना कॉन्सेंट्रेशन कम होगा उतना ज्यादा हमारा कंडक्टिविटी होने वाला है. द वेरिएशन इन लैम्डा एम विद कॉन्सेंट्रेशन इज डिफरेंट फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज स्लोली विद डाइल्यूशन. It can be seen that if we plot this, we obtain a straight line with intercept this lambda m naught. Now we know what is it. It's a limiting molar conductivity. जब हमारा concentration हम लेते हैं nearly zero and slope equal to minus times a. These the value of the constant A for a given solvent and temperature depends on the type of electrolyte. तो ये specific है, electrolyte specific. NaCl, CaCl2, MgSO4 are known as 1, 1, 2, 1, 2, 2 electrolytes. All electrolytes of a particular type have the same value of A. अब हमारे पास कोलरॉश का लॉ आता है. इसने कुछ नहीं बोला था, आपको याद रखना है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. अगर आपको एक सब्सटेंस दिया हुआ है, उसके आपको बताने हैं कितना उसका मोलर कंडक्टिविटी है और आपको उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस का मोलर कंडक्टिविटी पता है, यू विल सिंपली ऐड इट. फाइन, जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस होंगे. कोलरॉश एग्जामिन्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वैल्यूज फॉर नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड ऑब्जर्व सर्टेन रेगुलरिटीज. ही नोटेड दैट द डिफरेंस इन lambda m naught of the electrolytes NaX and KX for any X is nearly constant. For example this. And similarly he found this. ठीक है, ये माइनस करके यही मिलेगा जो ये. On the basis of the above observations he enunciated Kohlrausch law of independent migration of ions. अब ये क्या कहता है? The law states that the limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as the sum of the individual contributions of the anion and cation of the electrolyte. Electrolyte में जब ये ions में dissociate हुआ, उनकी जो individual molar conductivities थी, उनको add करके ही हमें जो है limiting molar conductivity मिलेगा पूरा electrolyte का. Alright, so they have given NaCl का example over here. Na positive और Cl negative का conductivity add करके NaCl का मिलेगा. If an electrolyte on dissociation gives these positive cations and this negative anions, then it's limiting. ये general equation बनाया है. These are the limiting molar conductivities of the cation and anion respectively.
वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का केस डिफरेंट है, लाइक एसिटिक एसिड, दे हैव लोअर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा जो होता है उनका लेस देन 1, हायर concentrations, and hence for such electrolytes the change in molar conductivity with dilution is due to increase in the degree of dissociation and consequently the number of ions in total volume of solution that contains 1 mole of the electrolyte. उतना ही हमने ले लिया, 1 मोल ही लिया इलेक्ट्रोलाइट का, उतना ही अमाउंट ले लिया, बट यहाँ पे क्या है, दिस टाइम अराउंड जो कॉन्सेंट्रेशन है उस पर तो डिपेंड करेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी, बट इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उस पर ज़्यादा, इन केस द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वुड चेंज बिकॉज दैट विल इंक्रीज ड्यू टू डाइल्यूशन, ठीक है, उससे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है तो इवेंचुअली नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा और उसकी वजह से जो है कंडक्टिविटी बढ़ेगी. 1 mole of electrolyte in such cases, lambda m increases steeply on dilution, especially near lower concentrations. Therefore, limiting value cannot be obtained by extrapolation to zero concentration. At infinite dilution, alright, at infinite dilution, that is concentration C tends to 0. वही होता है infinite dilution, electrolyte dissociates completely, तब जाके alpha 1 होता है. जितना ज़्यादा आप dilution बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा degree of dissociation भी बढ़ता है. It's more or less related to equilibrium now. But at such low concentration, the conductivity of the solution is so low that it cannot be measured accurately. Therefore, limiting value for weak electrolytes is obtained by using Kohl-Rosch law of independent migration of ions. So तब हम ऊपर वाला law use नहीं कर सकते जैसे हमने strong electrolytes में किया था. We simply like extrapolated the limiting value of the molar conductivity and we said that zero concentration तक चलाओ जी ग्राफ को और हमें मिल जाएगा हमारा value of conductivity. But what we do over here is we use Kohl-Rosch law of migration of ions. So over here you have alpha की value ये निकलती है यहाँ से. For your exam point of view, to remember this equation, यहाँ से भी questions पूछे गए हैं already. Alpha is molar conductivity divided by limiting molar conductivity. Molar conductivity is at any dilution say V. Limiting molar conductivity means at infinite dilution, या जहाँ पे आपका concentration is tending to 0. So यहाँ पे इन्हें एक और equation भी लिखा है. तो अच्छा, equilibrium constant लाया है again. यहाँ पे Ka, the reaction constant, यहाँ पे C alpha square divided by 1 minus alpha. Alpha की value आप जानते हैं, you can put it in here. Application क्या है Kohl-Rosch law का? Using Kohl-Rosch law of independent migration of ions, it's possible to calculate limiting molar conductivity for any electrolyte from the lambda naught of individual ions, जैसे हमने अभी किया. Moreover, for weak electrolytes like acetic acid, it's possible to determine the value of dissociation constant once we know the limiting molar conductivity and molar conductivity at a given concentration C. ये हमने यहाँ पे अभी किया क्योंकि हमें अल्फा का वैल्यू पता चल गया. Molar conductivity at any dilution divided by molar conductivity at infinite dilution. अब हमारा जो सेकंड पार्ट है लेसन का, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलिसिस. इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, उसमें वेरी इजी, अब उसका हमें उल्टा करना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का. एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज इज यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन. अब हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस है, उनके लिए हमें एक एक्सटर्नल सोर्स चाहिए उनको कैरी आउट कराने के लिए. वन ऑफ द सिंपलेस्ट इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंसिस्ट ऑफ 2 copper strips dipping in an aqueous solution of copper sulfate. DC voltage is applied to the 2 electrodes. Copper ions discharge at the cathode, negatively charged बनाता है कैथोड को, and the following reaction takes place. 2 copper rods ले लिए, उनको dip किया aqueous solution of copper sulfate में, and that's it. Copper metal is deposited on the cathode. At the anode, copper is converted to copper ions by the reaction this. अब anode पे क्या होगा? Oxidation होगा, Cu2 positive. Cathode पे reduction, gain of electrons, और copper metal जो है deposit हो जाएगा. Thus, copper is dissolved or oxidized at anode and deposited at cathode. Same situation. This is the basis for an industrial process in which impure copper is converted into copper of high purity. The impure copper is made at anode. Anode पे क्या होगा? Oxidation होगा. Copper ions जो है वो release हो जाएंगे. अब वो copper ions they'll dissolve on passing current and pure copper is deposited at the cathode because अब यही CO2 positive ions cathode पे चले जाएंगे, वहाँ pure form में deposit हो जाएंगे. Find many metals like sodium, magnesium. They produce on large scale. इस तरह से हम purification कराते हैं. Electrochemical cells का बहुत बड़ा एक ये advantage है. Sodium and magnesium metals are produced by the electrolysis of their fused chlorides, and aluminium is produced by electrolysis of aluminium oxide in presence of cryolite. Next up we have quantitative aspects of electrolysis. Michael Faraday, अब इसमें Faraday's laws देखने हैं. He gave that what was the quantitative aspect of electrolysis. हमने ये तो समझा कि भाई deposition हो रहा है एक metal का pure form में cathode पे. What was the quantitative basis of this? The first law over here we have the amount of chemical reaction which occurs at any electrode during electrolysis by a current is proportional to the
quantity of electricity passed through the electrolyte. Very important. आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, कितना chemical reaction हुआ या कितना mass deposit हुआ cathode पे, it is directly proportional to the amount of electricity that you're passing through the circuit, because this is electrochemical cell, you have an external source of battery. Second law क्या कहता है, the amount of different substances liberated at the same quantity of electricity passing through the electrolytic solution are proportional to their chemical equivalents. Chemical equivalent is atomic mass by number of electrons required to reduce the cation. यानी molecular mass by n factor will give you the equivalent mass, और equivalent masses जो है उनसे प्रोपोर्शनल होते हैं डिफरेंट वेट्स. वेट बाय इक्विवेलेंट वेट वन सब्सटेंस के लिए इज इक्वल टू वेट बाय इक्विवेलेंट वेट सेकंड सब्सटेंस के लिए, प्रोवाइडेड द इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट इज कांस्टेंट. देयर वर नो कांस्टेंट करंट सोर्सेज अवेलेबल ड्यूरिंग Faraday's times. The general practice was to put a coulometer, a standard electrolytic cell, for determining the quantity of electricity passed from the amount of metal deposited or consumed. तो तब जाके हमारे पास coulometers होते थे जो एक standard electrolytic cell मानी जाती थी. So Q is IT. We know charge is current into time. ये कुछ नया नहीं है. It's in coulombs. I is in amperes. Amount of electricity required for oxidation or reduction depends on the stoichiometry of the electrode reaction. Alright, 1 mole of the electron is required for the reduction of 1 mole of silver ions. अब यहाँ पे आपको stoichiometry का भी खास ख्याल रखना है. We know that charge on 1 electron is this, therefore the charge on 1 mole of electrons will be multiply it by Avogadro's number. तो एक मोल पे आपको चार्ज तभी पता चलेगा. This quantity of electricity is called a Faraday. What is Faraday basically? एक मोल of electrons पे कितना चार्ज होगा उसी को 96500, that is Faraday's basically. F से represent करते हैं. 1F is 96500 for the electrode reactions. ऐसे किया है इन्होंने. It is obvious that 1 mole of magnesium and aluminium require 2 mole of electrons and 3 mole of electrons respectively. The charge passed through the electrolytic cell during electrolysis is equal to the product of current in amperes and time in seconds. कितना charge flow करेगा? Current into time, because charge by time is current. तो यहाँ पे आपको ये बात भी ख्याल रखनी है, it's moles of electrons. We don't just talk in terms of electrons, we talk in terms of Faradays. और stoichiometry भी ख्याल रखेंगे. Products of electrolysis क्या मिलता है हमें? Products of electrolysis depend on the nature of material being electrolyzed and the type of electrodes being used. If the electrode is inert, example platinum or gold, it does not participate in the chemical reaction and acts only as a source or sink for electrons. यानी खुद participate नहीं कर रहा, बस source या sink है. कैसा electrode आप ले रहे हैं? On the other hand, if the electrode now is reactive, अब ये भी participate करेगा in the electrode reaction because it's reactive. Thus the products of electrolysis may be different for reactive and inert electrodes. Easy. The products of electrolysis depend on different oxidizing and reducing species present in the electrolytic cell and their standard electrode potentials. Moreover, some of the electrochemical processes, although feasible, are so slow kinetically that at lower voltages these do not seem to take place at all. An extra potential called the over potential has to be applied, which makes such processes more difficult to occur. तो हर एक चीज does not occur smoothly. अगर आपको external source देना है, कभी कभार आपको over potential करना पड़ता है, तब जाके the reaction will take place. For example, if we use molten NaCl, the products of electrolysis are sodium metal and chlorine gas. Here we have only one cation which is reduced at the cathode, और एक anion है जिसको ऑक्सीडाइज किया है एनोड पे. तो उसका क्या हुआ है, जो भी हमारे क्लोरीन आयंस थे Cl नेगेटिव, उन्हें लूज किया इलेक्ट्रॉन और वो क्लोरीन गैस बन गए. During the electrolysis of aqueous sodium chloride, the products are NaOH, Cl2 and H2. In this case, besides Na positive and Cl negatives, we also have H positive and OH because we are taking aqueous solution, not just molten solution. Alright, तो हमें water molecules के जो आयंस हैं उनको भी कंसिडर करना है. So at the cathode you will have reduction going on. एनोड पे H पॉजिटिव और ये होगा. और अब आपको कैसे पता चलेगा? H जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसी का रिडक्शन होगा, जिसका ज्यादा कम होगा उसी का ऑक्सीडेशन होगा. द रिएक्शन विद हायर वैल्यू इज प्रिफर्ड एंड देयरफॉर रिएक्शन एट द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज दिस. तो क्योंकि सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव्स में है, हाइड्रोजन का तो जीरो ही है, इसका मतलब रिडक्शन हाइड्रोजन का ही होगा. सो दिस इज व्हाट हैपेंस एज द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. दे हैव गिवन अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स ओवर हियर. अगेन आपको देखना है कि किसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अकॉर्डिंगली द प्रोसेस विल टेक प्लेस. जब आपके पास मोर देन 2 ऑप्शंस होते हैं फॉर oxidation reduction. The reaction at anode with lower potential of E naught is preferred and therefore water should get oxidized in preference to Cl negative. However, on account of over potential of oxygen, reaction is preferred. Thus the net reaction may be summarized as. तो इतने सारे reactions हमारे पास possible होते हैं. पहले तो water के presence में Na positive Cl negative, cathode पे इस तरह से रिडक्शन हो गया वाटर का ही, OH नेगेटिव मिल गया और Cl नेगेटिव. अब यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर आ रहा है, वाई? बिकॉज हमने ओवर पोटेंशियल दिया. बट स्पॉन्टेनियसली अगर हमने देखना था तो क्या होना था? देर ऑल नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, बट अगर जिसकी ज्यादा टेंडेंसी थी वो कौन था? दैट वाज वाटर.
The standard electrode potentials are replaced by electrode potentials given by Nernst equation to take into account the concentration effects. During the electrolysis of sulfuric acid, the following processes occur. अब इन्हें यहाँ पे NaCl की तरह sulfuric acid का भी reaction दिया है. Then we have batteries. Any battery actually it may have one or more cell connected in series. Basically battery भी cell ही है, series में हमने इसको connect किया है. It is a source of energy, electrical energy, जिसमें store होता है chemical energy of the redox reaction and it gets converted. However, for a battery to be of practical use, it should be reasonably light, compact, voltage should not vary appreciably during its use. ठीक है, तो ये सब इसके pros होते हैं. और फिर अब हमारे पास दो तरह के बैटरीज होते हैं, एक तो प्राइमरी होते हैं और हमारे पास सेकेंडरी होते हैं. प्राइमरी बैटरी के केस में they're rechargeable, they're reusable and we have certain examples जैसे यहाँ पे ने दिया है. This is primary battery. The reaction occurs only once after their use over a period of time. Battery, alright, they're not, I'm so sorry, my bad if I said rechargeable. They're the secondary batteries are rechargeable and they're reusable. The use and throw ones are the primary batteries. Alright, once they're dead they cannot be reused again. उनमें कोई reversible reaction नहीं होता. The most familiar example of this type is the dry cell, alright, which is used commonly in transistors and clocks. तो आपने देखा जो होगा, एक बारी खत्म हो गई तो खत्म हो जाती है. इसमें अब इसका क्या कॉम्पोजिशन है डायग्रामेटिकली, हमारे पास एक कार्बन रॉड होता है, ग्रेफाइट रॉड, जो विच विल एक्ट एज अ कैथोड. जिंक का बाहर से यू विल हैव अ कप और द एनोड, जो बाहर से जिंक कंटेनर होगा, और बीच में व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट, इट इज अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, मैंगनीज ऑक्साइड एंड कार्बन ब्लैक. ये इसका इलेक्ट्रोलाइट है. दिस इज ऑल अबाउट द ड्राई सेल. तो ये यहाँ पे लिख रहा है स्पेस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स इज फिल्ड बाय मॉइस्ट पेस ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड एंड इलेक्ट्रोड रिएक्शंस आर कॉम्प्लेक्स बट दे कैन बी रिटन एज दिस. एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा. एनोड क्या है, जिंक है, बेसिकली जिंक कंटेनर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कैथोड पे ग्रेफाइट है, वहां पे क्या होगा, रिडक्शन होगा. यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जो है ऑब्वियसली उसका ज्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल, सो उसी का रिडक्शन होगा. Manganese is reduced from the +4 oxidation state to the +3 state. Ammonia produced forms a complex to give this cell has a potential of nearly 1.5 volt. Mercury cell भी एक और तरह का हमारे पास primary cell होता है for low current devices like hearing aids, watches, etc. तो zinc mercury amalgam will be the anode और paste of mercuric oxide and carbon will be the cathode. Electrolyte is potassium hydroxide and zinc oxide. More or less ये याद रखना है, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है. It's just the construction of the zinc amalgam वाला जो हमारे पास एक और mercury cell है. You have the anode, you have the anode cap, you have the gasket, cell can, separator, cathode. The overall reaction is represented like this. The cell potential is approximately 1.35, remains constant during its life. ठीक है, does not involve any ion in solution whose concentration can change during the lifetime. तो voltage same ही रहेगा. Secondary batteries क्या है, starting में I told you they can be reused. There's a reversible reaction process going on. Fine. Secondary cell after use can be recharged by passing current through it in the opposite direction so that it can be used again. A good secondary cell can undergo a large number of discharging and charging cycles. ठीक है, बहुत सारे साइकिल, जितने ज्यादा उतनी ज्यादा अच्छी. The most important secondary cell is the lead storage battery. अब लेड स्टोरेज बैटरी में क्या क्या है, समथिंग दैट यू हैव टू यूज, ये ऑटोमोबाइल वगैरह इन्वर्टर्स में यूज होता है, सो इट्स रियली एफिशिएंट. यहाँ पे यू हैव, ये इसका रिएक्शन है, एनोड पे आपका जो है लेड है, उसका होना है ऑक्सीडेशन, और फिर हमारे पास जो कैथोड है उस पर रिडक्शन होना है लेड ऑक्साइड का. सो लेड बिकम्स द एनोड एंड लेड ऑक्साइड बिकम्स द कैथोड. ऑलराइट, दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन. H2SO4 बिकम्स द इलेक्ट्रोलाइट. Alright, तो यहाँ पे it says that on charging it's reversed, PbSO4 on anode, cathode पे Pb आएगा, तो तब इसीलिए we have it here, that's why it's reversed. हम opposite direction में अब current को चलाएंगे. Another important secondary cell is the nickel cadmium cell which has longer life than the lead storage but more expensive to manufacture. That is the nickel cadmium cell. So we shall not go into the details. यहाँ पे cadmium है और nickel है, तो cadmium की oxidation हो रही है, nickel की clearly यहाँ पे reduction हो रही है. Alright, that's what you can see. तो cadmium will be the anode and nickel will be the cathode. फ्यूल सेल्स क्या होते हैं, ऐसे सेल्स जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डायरेक्टली कन्वर्ट, जो हमारे एक्चुअली हीट एनर्जी जो है उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. ठीक, फ्यूल उसी को कहते हैं ना जिसको जला के इवेंचुअली हम इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी भी तरीके का निकाल सकते हैं. प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय थर्मल प्लांट्स इज नॉट अ वेरी एफिशिएंट मेथड एंड इज अ मेजर कॉज ऑफ पोल्यूशन in such plants. The chemical energy, heat of combustion of fossil fuels is first used for converting water into high pressure steam. This is then used to run a turbine to produce electricity.
डैम्स वगैरह होते हैं. We know that a galvanic cell directly converts chemical energy into electricity and is highly efficient. It is now possible to make such cells in which reactants are fed continuously to the electrodes and products are removed continuously from the electrolyte compartment. Galvanic cells that are designed to convert the energy of combustion of fuels like hydrogen, methane, methanol, जो भी हमारे inflammable fuels होते हैं, उनकी heat of reaction या उनकी जो enthalpy है उसको electricity में convert करना वही fuel cells का काम होता है. One of the most successful fuel cells uses the reaction of hydrogen with oxygen to form water. This has also been asked in exams. H2 plus O2 water. Water fuel जो होता है हमारे पास water fuel cell वो बहुत efficient होता है because water के release के साथ बहुत सारा heat जो है वो release हो जाता है. उसी heat को electricity में convert करता है fuel cell. The cell was used for providing electrical power in the Apollo space program. The water vapors produced during the reaction were condensed, added to the drinking water supply for the astronauts. In the cell, hydrogen and oxygen are bubbled through porous carbon electrodes into concentrated aqueous sodium hydroxide. Catalysts like finely divided platinum, palladium. This is a very complex mechanism जिसमें हम ये सब कर रहे थे. अब आप imagine करें space program में हमने जो source of energy लिया. The electrode reactions are given over here. कैथोड पे ऑक्सीजन ले लिया, एनोड पे हाइड्रोजन ले लिया. ऑक्सीजन का क्या होगा? रिडक्शन होगा. हाइड्रोजन का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा. यहाँ से जब वाटर मिलेगा आपको, यहाँ बहुत सारा एनर्जी रिलीज होने वाला है. ओवरऑल रिएक्शन इज दिस. द सेल, यस, ऑक्सीजन and also this also you have to remember oxygen ही कैथोड बनाएगा, उसी का रिडक्शन होना है. Cells run continuously as long as the reactants are supplied. Fuel cells produce electricity with an efficiency about 70% as compared to the thermal plants. Thermal plants जो होते हैं उनमें सीधे वही टर्बाइन वाला conventional system होता है, उसका सिर्फ 40% होता है. There's been tremendous progress in the development of new electrode materials, better catalysts, electrolytes for increasing the efficiency of fuel cells. तो obviously इसमें भी research field बहुत है. Now we have come to a very easy corrosion. Again we've been doing this ever since. Corrosion जो है metal surfaces की होती है, हम देखेंगे. Corrosion slowly coats the surface of metallic objects with oxides or other salts of the metal. The rusting of iron, tarnishing of silver, development of green coating on copper and bronze are some of the examples of corrosion जो हम daily life में भी देखते हैं. It causes enormous damage to buildings, bridges, ships and to all objects made of metals, especially that of iron. We lose crores of rupees every year on account of corrosion only. In corrosion, a metal is oxidized by loss of electrons to oxygen and formation of oxides. क्या होता है corrosion में? Metal जो है loss of electron हो गया और oxide बन गया. Fine. This is oxidation of the metal. Corrosion of iron, जिसको rusting बोलते हैं, in presence of water and air. Chemistry of corrosion is quite complex, but it may be considered essentially as an electrochemical phenomenon only. क्योंकि क्या हो रहा है? बाहर से तो कोई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर का ही एनर्जी जो है अंदर ही रिएक्शंस हो रहे हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं विद द रिलीज ऑफ एनर्जी एट अ पर्टिकुलर स्पॉट एट एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन. ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एंड द स्पॉट बिहेव्स इन एज एनोड एंड वी राइट द रिएक्शन लाइक दिस. सो ये यही कह रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है. सो व्हाट हैपेंस इज रस्टिंग आल्सो यू हैव बीन डूइंग. इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड एट द एनोडिक स्पॉट मूव थ्रू द मेटल एंड गो टू अनदर स्पॉट ऑन द मेटल एंड रिड्यूस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ H positive, which is believed to be available from hydrogen carbonate, which is formed due to dissolution of carbon dioxide from air to water. Hydrogen ion in water may also be available due to dissolution of other acidic oxides from the atmosphere. This spot behaves as cathode with the reactions. What happens is basically at a certain spot if oxidation takes place, a loss of electrons will result and these electrons are going to migrate to other parts और वहाँ पे वो फिर से oxidize करेंगे. तो यहाँ पे cathode का reaction दिया है. So the overall reaction being this: the ferrous ions are further oxidized by atmospheric oxygen to ferric ions, which come out as rust in the form of hydrated ferric oxide. So basically Fe2O3 x times water, hydrated ferric oxide ही rust होता है. Prevention of corrosion is of prime importance. Not only saves money but also helps in preventing accidents such as a bridge collapse, failure of a key component due to corrosion. One of the simplest methods of preventing corrosion is to prevent the surface of the metal to come in contact with the atmosphere. This can be done by covering the surface with paint or by some chemical. जैसे bisphenol लिया है इनने, कुछ ऐसा केमिकल है जिससे आप कवर करेंगे, फिजिकली बैरियर प्रोवाइड करेंगे मेटल को, तो corrosion नहीं होगा and you can save a lot of loss. Another simple method is to cover the surface by other metals that are inert or react to save the object. An electrochemical method is to provide a sacrificial electrode of another metal which corrodes itself but saves the object. So sacrificial का वही मतलब है कि जो यहाँ पे जो दूसरा हम एलिमेंट लेंगे that is going to cover our metal और corrosion नहीं होगा. And with that we come to the end of the lesson. I hope it was helpful to you and I hope you could grasp anything. It's more useful if you're done with the basics and it's just a revision session. So thank you so much for watching. I'll see you in my next one.